Students, we have done the question answer section of this chapter number 10, drug addiction. Now we are moving towards the second question of this exercise. Let's see what is the question. The question is, guess the meaning of the following words. Write guess meaning in the middle column. Confirm the meaning by using dictionary. So student, the words from the text is, first word is long term. लॉन्ग टर्म का जो गेस्ट मीनिंग है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, बट व्हेन आई लुक्ड इनटू द डिक्शनरी यहां पे उसका मीनिंग था लॉन्ग लिव्ड, समथिंग विच इज लॉन्ग लिव्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज डिपेंडेंस. डिपेंडेंस को जो डिक्शनरी मीनिंग स्टूडेंट है वो जब हम टोटली किसी चीज पे डिपेंड करते हैं या टोटली किसी चीज के किसी पे रिलाई करने के एडिक्ट हो जाते हैं तब हम डिपेंडेंस शो कर रहे होते हैं. देन वी हैव पीयर, दैट इज सेम एज ग्रुप, लेकिन डिक्शनरी में फ्रेंड जोन पीपल, यानी कि आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जितने भी फ्रेंड जोन होते हैं आपके, दैट इज पीयर ग्रुप. द नेक्स्ट वर्ड इज आउटकास्ट. आउटकास्ट एंड इसका यहाँ जो गैस मीनिंग मैंने रखा या मुझे जो लगा दैट इज आइसोलेशन, बट डिक्शनरी में जो इसका मीनिंग है दैट पर्सन विच इज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी जिसको आइसोलेट करती है, दैट इज आउटकास्ट. देन वी हैव रैपिड. Guess meaning of rapid is fast, but dictionary meaning is quick. Then we have rehabilitation. Rehabilitation ka guess meaning according to me is recover, but when we look into the dictionary, the rehabilitation means to be back in normal state. The last word is critically. Critically guess meaning is worse, but dictionary meaning is crucial. So student, I hope you understand this vocabulary exercise. Let's move to next question. Students, we are on the grammar portion of this exercise, chapter number 10, drug addiction. The first question related to grammar portion is, use the following relative pronouns in sentences. So we are given with the relative pronouns who, which, that, whom and whose. And we are told by the writer that we have to make sentences out of these pronouns. So I have already made the sentences for you guys, but for you guys मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने sentences खुद create करें, but take an example of all these sentences. Mrs. Pratt, who is very kind, is my teacher. Now यहाँ पे Mrs. Pratt, ये जो who का word है ये relative pronoun है, it is referring back to Pratt. ये refer back कर रहा है noun की तरफ. Now, the car which I was driving at the time suddenly caught fire. So, we are talking about that car which I was driving. So, this means the person that phoned me last night is my friend. So, here that refers to the person. To whom did you speak? To whom did you wish to speak? My brother, whose phone you just heard, is a doctor. So here we are talking about the brother whose phone just you heard. Means के जिसकी आपको अभी कॉल आई है, मेरे में भी बहुत सारे भाई हो सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ब्रदर हु जस्ट यू हर्ड, कि जिसका आपको अभी फोन आया है वो क्या है, वो डॉक्टर है. तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है माय ब्रदर की तरफ. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज.